My lovely students, welcome to Mathological. This is the 15th session on permutations and combinations. And in this session, we'll be discussing some more questions based on geometrical application on permutations and combinations. Okay, so to start this session, the first question, there are 7 horizontal parallel lines and 5 vertical parallel lines, each at a gap of 1 unit from the neighboring lines in the plane. So how many rectangles and squares can be drawn with the help of these lines? 7 lines are horizontal and parallel, and 5 are vertically parallel. So each at a gap of 1 units. Let us form 7 horizontal lines first. Seven horizontal lines, okay. And then 5 vertical lines. Now we have to identify how many squares can we form and how many rectangles can we form. So to form a rectangle, we need any two lines. Rectangle can be of any size. Okay, so if we choose, let us say, out of the 7 horizontal lines, any 2 horizontal lines and any 2 vertical lines, we will be getting a rectangle. Isn't it so? Okay, so any 2 horizontal lines out of 7, number of ways will be 7c2. Any 2 vertical lines out of 5, that will be 5c2. So 7c2 into 5c2, that is equal to 21 into 10, 210 rectangles will be there. Okay, 210 rectangles will be there. Now coming to squares. So for squares, the length and breadth both should be equal. And for both to be equal, for example, if we take line number 1, okay, if we take this line, let us take this example. This is one of the squares. Okay, and for this square, we need first horizontal line and second horizontal line. Similarly, first vertical line and second vertical line. Basically, this is the smallest square possible. 1 cross 1 का square है. ठीक है. So for 1 cross 1 square, we need the closest horizontal lines and the closest vertical lines. Isn't it so? ठीक है. So squares will be having a type based on size. So there could be 1 cross 1 squares, 2 cross 2 squares, 3 cross 3 and 4 cross 4. ठीक है. Since vertically total length कितना है, that is 4 units. तो 4 क्रॉस 4 से बड़े स्क्वायर्स नहीं बन पाएंगे. हॉरिजॉन्टली तो हमारे पास स्कोप है because the total length is 6 units, but vertically there is the only length possible is 4 units. तो 4 cross 4 is the maximum size of the square. 1 cross 1 के स्क्वायर कितने बनेंगे, because this is 4. अगर हम लार्जेस्ट स्क्वायर की बात करें, लार्जेस्ट रेक्टेंगल की बात करें, लार्जेस्ट रेक्टेंगल इज दिस वन ऑफ 4 cross 6 डायमेंशंस, यानी कि 4 cross 6 24 स्क्वायर यूनिट्स का वी हैव द लार्जेस्ट स्क्वायर. And all 1 cross 1 squares are inside this square. So total 1 cross 1 squares कितने मिलने वाले हमें, 24. 1 2 3 4, 4 in a line, 4 in a row, and similarly 6 rows. So 4 into 6, 24. Total 24 squares of 1 cross 1, 1 unit cross 1 unit are there. ठीक है. Similarly 2 cross 2 वाले, तो 2 cross 2 के first square is this square, this one. ठीक है. Similarly this one is second, and then 3 in a row multiplied by column में कितने होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. पैटर्न देख पा रहे हो, 3 क्रॉस 5 यानी 15 स्क्वायर्स ऑफ 2 क्रॉस 2. ठीक है. तो 4 क्रॉस 6 1 क्रॉस 1 के स्क्वायर्स थे, 3 क्रॉस 5 2 क्रॉस 2 के स्क्वायर्स थे, दैट इज 15. पैटर्न देख पा रहे हो, 4 से 3 यानी 1 रिड्यूस हो गया, 6 से 5 1 रिड्यूस हो गया. तो 3 क्रॉस 3 के 2 क्रॉस 4 होने चाहिए. बाय दैट लॉजिक क्या ऐसा ही हो रहा है. देखो 3 क्रॉस 3 के स्क्वायर्स चेकआउट करेंगे तो डेफिनेटली फर्स्ट स्क्वायर विल बी this one, and then second will be shift हो जाओ rightwards. Similarly first vertically, second
थर्ड एंड देन फोर्थ. तो 2 क्रॉस 4 8. सिमिलरली 4 क्रॉस 4 के हो जाएंगे 1 क्रॉस 3 which is equal to 3 squares. So total number of squares will be 24 plus 15, that is 39 plus 11, 50 squares. Number of rectangles are 210, which also includes these 50 squares. Rectangles include कर रहे हैं in 50 squares को. So total 50 squares are there and total 210 rectangles are there. Is that clear? Okay. Next question पे move on करते हैं. The number of triangles whose vertices are at the vertices of a regular octagon but none of whose sides is a side of the octagon. कितने ऐसे हमें triangles मिलेंगे? Triangles whose vertices are at the vertices of a regular octagon but none of whose sides is a side of the octagon. Okay. So let us make a diagram first for the octagon. A regular octagon है, so all sides are equal. Total 8 vertices are there since this is an octagon. Let us say this is A, B, C, D, E, F, G and H. The question is saying that vertices तो वही होनी चाहिए जो कि octagon की है, but none of the sides should be the sides of the triangle. Sides of the octagon should not be sides of the triangle. ठीक है. So कौन से triangles allowed होंगे? For example, if we take a triangle ACG, so will that be allowed? AC is not the side of octagon, so yes, this is allowed. AC is not the side, CG is not the side, AG is also not the side, so definitely triangle ACG is allowed. If we take, let us say, triangle CDE, so will triangle CDE be allowed? Definitely not, because CD is also the side of octagon, DE is also the side of the octagon, and CE is not. But the point is that there are two consecutive sides, so triangle CDE, this will not be allowed because two sides are the sides of the octagon as well. Similarly, if we have, let us say, only one side common, for example, if we have a triangle that is BGF, so triangle BGF will also not be allowed because one side is common. Okay, so there will be basically two cases. One case is when two sides are common, and second case is when one side is common. Both these cases we have to remove from total number of cases. Total cases. Okay. Total cases कितने आने वाले हैं आपके? Total cases तो clear है, since total 8 points are there and we will select 3 points, so 8C3 will be total cases. Okay. ठीक है. now पहले consecutives की बात कर लेते हैं. Consecutives की, since there are total 8 points. Okay, let us say if we take a hexagon with total 6 points, A, B, C, D, E, F. Okay. And if we need to take two consecutive points, two consecutive points can be AB, two consecutive points, so that can be A and B, or can be B and C, or can be C and D, or can be D and E, or E and F, or lastly can be F and E. The number of ways we can select two consecutive points, that is equal to 6. Since this is a 6-sided polygon, the number of ways to select two consecutive points, that is also equal to 6. If we needed to take 3 consecutive points, तब number of ways कितने होते हैं for 3 consecutive? A, B and C, B, C, D, C, D, E, D, E, F, E, F, A and F, A, B. So again there are 6 ways. इस बात को generalize करें, so you have n-sided polygon, so number of ways to select 2 consecutive points will be equal to n. Number of ways to select 3 consecutive points will be equal to n. Number of ways to select 4 consecutive points will also be equal to n, till for n-sided polygon. So 2 consecutive, 3 consecutive, 3 consecutive हो या 2 consecutive हो या 4 consecutive हो, इन सबके लिए number of ways क्या होगा? That will be equal to n apart from n consecutive. ठीक है, क्योंकि n consecutive के लिए 1 हो जाएगा till n minus 1.
this will always be equal to n. Okay, so in this case, total is 8c3 and the total number of triangles, if possible, that will be 8c3. Now we have to subtract those cases when we have at least one side consecutive or we have two sides consecutive. Okay, so if we have, let us say, one side that is consecutive, तो वन साइड कॉन्जिटिव वाले कितने ट्रायंगल्स बनने वाले हैं, वन साइड बोल रहे हैं, टू पॉइंट्स कॉन्जिटिव हो यानी कि वन साइड कॉमन हो जाएगा, या फिर थ्री पॉइंट्स कॉन्जिटिव होंगे तो उस केस में हमारे टू साइड्स विल बी कॉमन. ठीक है, सो दो केसेस बनने वाले हैं. इन द फर्स्ट केस, लेट अस से टू पॉइंट्स आर कॉन्जिटिव, सो दिस इज अ कॉमन साइड. एक एग्जांपल ले लिया. ऐसे कितने केसेस बनेंगे? टोटल 8 केसेस बनेंगे. बट इफ वी हैव टेकन दिस एग्जांपल, तो हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स विल बी देयर फॉर दिस कॉमन साइड? Since this is the only common side, because we are taking one common side or two consecutive. ठीक है, one common side लिख दो या कहो कि two consecutive वाला केस है. तो if two points are consecutive, तो in that case exactly two, तो डेफिनेटली फिर ये जो नेबरिंग पॉइंट्स हैं हमारे, दीज विल नॉट बी इंक्लूडेड, बिकॉज इनसे फिर हमारे टू साइड्स कॉन्जिटिव वाले ट्रायंगल्स बन जाएंगे. नेबरिंग को एक्सक्लूड कर दिया. नाउ दीज फोर पॉइंट्स कैन मेक द केसेस, सो वी कैन हैव फोर ट्रायंगल्स, फोर सच ट्रायंगल्स फॉर एवरी साइड. ठीक है, सिंस ओनली वन साइड इज कॉमन, और ऐसे 8 केसेस मिलेंगे बिकॉज टू कॉन्जिटिव वाले 8 केसेस होंगे, तो 8 इंटू फोर सच ट्रायंगल्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस साइड, this could be one of the triangles, this could be second triangle, this could be third one, and hence this could be fourth one. So 4 triangles for every side, 8 into 4 triangles will be there. Plus now we will be taking two common sides or 3 consecutive points wala cases, 2 common sides or 3 consecutive points. If we have 3 consecutive points, number of ways कितना होगा? 8 ही ways होंगे, तो एग्जैक्टली 8 ट्रायंगल्स ही बनेंगे, बिकॉज हमने 3 कॉन्जिटिव ले लिए, उसके बाद तो कोई पॉइंट और लेना बचा नहीं. तो 8 इंटू 4 प्लस 8, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ केसेस नीडेड टू बी एक्सक्लूडेड. 8c3 इज इक्वल टू 56 और 56 माइनस 40, सो आंसर विल बी इक्वल टू 16 triangles will be there. Option D will be the answer, that 16 such triangles will be there in this case. Okay, clear? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Next question, in how many ways is it possible to choose a white square and a black square on a chessboard so that the squares must not lie in the same row or the same column? Number of ways to choose a white square and a black square on a chessboard so that the squares must not lie in the same row or same column. So chessboard, unless otherwise mentioned, chessboard is always a 8x8 वाला chessboard. 8x8 यानी कि total 64 squares are there, out of which 32 are black and 32 are white alternatively. So let us make a chessboard first. 8x8 chessboard. Eight horizontal lines. Similarly, 8 vertical lines. में टोटल लाइंस तो वैसे 9 है, 9 हॉरिजॉन्टल है, 9 वर्टिकल लाइंस, तभी तो हमारा 8x8 का चेसबोर्ड बनेगा. ठीक है, नाउ अल्टरनेटली विल बी हैविंग वन ब्लैक एंड वन वाइट, वन ब्लैक एंड वन वाइट. ओके, और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग दैट स्क्वायर्स मस्ट नॉट लाई इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम. दैट इज अवर कंडीशन. इफ यू हैव सेलेक्टेड
since we need to choose one white square and one black square out of the pair, एक स्क्वायर जिस कॉलम या रो में होगा in the same column or row, we do not need the second square. So how many ways should be there? Now we have to choose one black square and one white square. So since there are 32 black squares, so choose one white, one black square, number of ways will be 32C1. In 32C1 ways or 32 ways, we can select one black square. Now that we've selected one black, let us say that is this one. This square we've chosen. Okay, so if we've chosen this square, so we do not need the second square or the white square in the same row or in the same column. So we have total 32 white squares, but कौन से choose नहीं करने हैं? Those which are lying in the same row, यानी कि this one, this one, this one, this one. Similarly, same column, यानी कि total 4 white squares are in the same row, total 4 white squares are in the same column, and these 4 plus 4, 8 squares should not be selected. ठीक है, so total 32 में से we do not want these 8 squares, यानी कि 24 में से एक select करना पड़ेगा. So 32C1 into 24C1, that should be our answer. 32 into 24, that is equal to 768 ways are there to select one black and one white square such that both are not in the same row or in the same column. Okay, क्या ये clear है? Total ways will be 768. ठीक है, that would be the answer. Is that part clear? Okay. Now, in a chessboard, one more thing that we need to be understanding about, जब भी chessboard based question आए, तो there are some common patterns. For example, we need to identify some special cases. For example, this square, this is a corner square. ठीक है. Similarly, this is also a corner square. This is also a corner square, and this is also a corner square. So some corner squares, number of corner squares कितने हुए? Total 4 है. Corner squares are 4. Then there are squares on the sides. ठीक है, कॉर्नर स्क्वायर भी साइड में लाई कर रहा है, बट दैट इज लाइंग ऑन टू साइड्स. ठीक है, सो दैट इज वाई दैट इज अ सेपरेट स्क्वायर. कॉर्नर स्क्वायर्स के एडजेसेंट स्क्वायर्स कितने हैं? वी हैव टोटल 3 स्क्वायर्स which are adjacent to corner square. Isn't it so? 3 squares which are adjacent to corner square. Or then there are side squares. Number of side squares कितना होगा? On one side there are 6 which are not corner square. ठीक है, apart from corner square. तो 6 on each side, total 4 sides, 6 into 4, 24 are side squares. And then we have squares which are inside or internal squares inside the chessboard. Number of such squares are total 6 on each. 6 cross 6 का ये जो हमारा इंटरनल बन रहा है, these all are inside squares. The number of inside squares are 6 cross 6. That is equal to 36. Corner squares are 4, side squares are 24, inside squares are 36. 36 plus 24, 60 plus 4, 64 squares in total, out of which 4 are corner squares, 24 are side squares, and inside squares are 36. Is that pattern clear? Because if that is clear, then answer the next one. Next question, in how many ways is it possible to choose two squares on a 8 cross 8 chessboard such that they have only one corner as common? ठीक है, यहाँ पे जो हमारा चेसबोर्ड का कॉर्नर है उसकी बात नहीं हो रही है. वन कॉर्नर of squares is common. That is the question. In how many ways is it possible to choose two squares on a 8 cross 8 chessboard such that they have only one square, one corner in common? तो कितने ऐसे केसेस बनेंगे हमारे जिनमें कि there will be exactly one corner as common? Okay. अगेन एक बार हमें चेसबोर्ड तो ड्रॉ करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली ही सॉल्व कर पाएंगे. 8 cross 8 चेसबोर्ड.
तक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. Solve at your end. What should be the answer? How many such cases will be there? So firstly, we'll be taking it by considering the three specific cases. कॉर्नर स्क्वायर्स का केस कंसिडर करेंगे, साइड स्क्वायर का केस कंसिडर करेंगे, और फिर इन साइड वाले स्क्वायर्स का, इंटरनल स्क्वायर्स का केस कंसिडर करेंगे. अकॉर्डिंगली देखेंगे इन एवरी केस इन हाउ मेनी वेज कैन वी फाइंड आउट सच स्क्वायर्स. Okay, so if we take a corner square, let us say, so how many squares can we find out which will be having exactly one corner as common? ठीक है, सो दिस कॉर्नर इज आउटसाइड, तो यहां से तो कोई कॉमन स्क्वायर मिलने वाला नहीं. सिमिलरली फॉर दिस वन, बिकॉज अगर हम इस पॉइंट के लिए देखेंगे, सो दिस एडजेसेंट स्क्वायर is having this corner is common, but the point is कि सिर्फ ये कॉर्नर कॉमन नहीं, ये वाला कॉर्नर भी कॉमन है. तो देयर आर टू कॉमन कॉर्नर्स एंड वी नीड ओनली वन कॉर्नर एज कॉमन. तो ये वाला तो नहीं हो सकता. सिमिलरली फॉर दिस वन, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज टू कॉर्नर्स आर कॉमन. बट इफ वी टेक दिस स्क्वायर, so for this square we have exactly one corner common, so yes, these two. There is only one case for a corner square. For a corner square, there is exactly one case. Total corner squares are 4, or for every corner square, we have exactly one case. ठीक है, तो 4 into 1, 4 cases will be there for corner squares. Isn't it so? ठीक है, then comes side squares. मैं एक साइड स्क्वायर का एग्जांपल ले लेते हैं. Let us say this side square. Okay. तो फॉर अ साइड स्क्वायर कितने ऐसे स्क्वायर्स मिलने वाले हैं? तो वन स्क्वायर विल बी दिस वन, दिस कॉर्नर इज कॉमन. वन विल बी दिस वन, दिस कॉर्नर इज कॉमन. बेसिकली जो भी हमें स्क्वायर्स मिल रहे हैं जहां पे ये कंडीशन कॉमन मिलेगा, दोज विल बी ऑलवेज बी डायगनली, बिकॉज इफ दे आर राइट अप द स्क्वायर, देन देयर विल बी टू कॉर्नर्स एज कॉमन. इजंट सो? बिकॉज साइड कॉमन हो जाएगा, या राइट एडजेसेंट है तो भी हमारा साइड कॉमन होगा, और साइड कॉमन नहीं चाहिए हमें, कॉर्नर कॉमन चाहिए. तो दे विल ऑलवेज बी डायगनली, द टू स्क्वायर्स विल ऑलवेज बी डायगनली. ठीक है, सो तभी हमें एक कॉर्नर कॉमन मिलेगा. तो फॉर अ साइड स्क्वायर देयर आर टू सच केसेस. टू सच केसेस. टोटल साइड स्क्वायर्स कितने हैं हमारे? 6 into 4 24, एंड 24 into 2 48 सच केसेस विल बी देयर फॉर साइड स्क्वायर्स. देन लास्टली बात करते हैं इन साइड स्क्वायर्स की, इंटरनल स्क्वायर्स की. टोटल इंटरनल स्क्वायर्स है 36. हर एक के लिए नंबर ऑफ केसेस कितने मिलेंगे? So let us draw that first. Let us say this is the side square that we are inside square that we are concerned about. For this inside square, number of such squares will be diagonally देखना है. So 1, 2, 3 and 4. Total 4 such cases are there. 36 into 4, that is equal to 144. So total cases आ गए हमारे 144 plus 48 plus 4, that is equal to 192 plus 4, 196. But क्या 196 हमारा आंसर होगा? Pause the video and think about it, because in many cases हम डबल काउंटिंग कर रहे हैं. जहां पे भी डबल काउंटिंग करेंगे वहां पे डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा. सो क्या यहाँ पे कुछ केसेस में डबल काउंटिंग हुआ है, सारे केसेस में डबल काउंटिंग हुआ है, या किसी भी केस में डबल काउंटिंग नहीं हुआ है? सिंस इन एवरी केस वी आर चूजिंग टू स्क्वायर्स, वी आर ऑलवेज चूजिंग अ पेयर. लेट अस से इफ दैट पेयर इज ए एंड बी, तो ए के लिए हमने बी को काउंट किया, बी के लिए ए को काउंट किया. तो हर केस में वी हैव काउंटेड टू स्क्वायर्स, टू केसेस. सो फॉर वन केस वी हैव काउंटेड टू केसेस, यानी कि डबल काउंटिंग किया है सारे केसेस में. सो विल बी एट द एंड डिवाइडिंग इट बाई 2. 196 by 2, 98 cases will be there. 98 such cases will be there. Our answer in this question will be 98. Is that clear? ठीक है. And if that is understood, तो फिर method 2 देखते हैं to solve this same question. Method 2. This is method number 1. Method number 2. क्वेश्चन की कंडीशन ये एग्जैक्टली वन कॉर्नर कॉमन होना चाहिए. ठीक है, सो लेट अस टेक अ 2x2 ग्रिड. So in a 2x2 grid, the diagonal squares will have this property, and you will be having two pairs exactly
For example, if squares are named A, B, C, D, so AC and BD, these are two pairs in a 2 cross 2 grid with this property that they have exactly one square, one corner in common. और वो corner common कौन सा है? That is this corner. ठीक है. So this corner is common in case of AC and BD. और तो कोई corner कहीं पे common मिलने वाला नहीं है. And this is happening in a 2 cross 2 grid और 2 cross 2 square. So अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि in this 8 cross 8 chessboard how many 2 cross 2 squares are there, so that will give us our answer. तो 2 cross 2 squares कितने मिलने वाले? Number of 2 cross 2 squares in this 8 cross 8 square. तो 2 cross 2 के कितने मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 and 7. 7 horizontally, 7 such squares, and similarly 7 will be vertically. 4 5 6 and 7. तो 7 cross 7 यानी कि total 49 squares will be there of 2 cross 2 size. और हर एक सच स्क्वायर में हमें दो पेयर्स मिलेंगे. तो 49 into 2, आंसर विल बी 98. 98 पेयर्स इन टोटल. दैट विल बी आवर आंसर. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है. सो आवर आंसर विल बी 98. दिस मेथड इज स्मार्ट इफ यू आइडेंटिफाई द पैटर्न. अदरवाइज जनरल मेथड से करोगे, कॉर्नर, साइड, इनसाइड, सारे केसेस लोगे, हर एक केस में आइडेंटिफाई करोगे और अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे. ओके, क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the figure, now this is a cat previous question. In the figure, the lines represent one-way roads allowing travel only northwards or only westwards. Along how many distinct routes can a car reach point B from point A? So the agenda is to reach point P from point A, starting from point A. ठीक है. In how many ways can we do it? जबकि हमें lines given है, एक proper grid given है, जिसमें कि we have total 4 roads, lines or roads, lanes basically. So we have 4 westward roads, isn't it? So 4 westward roads and total 1 2 3 4 5 6 northward roads. Along how many distinct routes can a car reach point B from point A? Point A से point B पे जाना है एंड अ कार कैन ओनली ट्रैवल नॉर्थवर्ड्स जाएगी या फिर वेस्टवर्ड जाएगी, यानी कि वेस्ट जाके ईस्ट वापस नहीं आएगी. तो वेस्ट जाएगी तो वेस्ट ही जाएगी, नॉर्थ जाएगी तो नॉर्थ ही जाएगी, वेस्ट जाके नॉर्थ जा सकती है, यानी कि कुछ पार्ट वेस्ट गई, फिर कुछ पार्ट नॉर्थ गई, फिर कुछ पार्ट वेस्ट गई. इन द एंड ए से बी पे पहुंचना है. तो अवर एजेंडा इज टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ओके. तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इफ वी कंसिडर 1 यूनिट, तो टोटल 4 और 6. हाँ ठीक है, 4 और 6 लाइंस हैं, ये ध्यान रखना है. डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन हमारी क्या है? 3 और 5 है. 3 units northwards and 5 units westwards. In the end जाना है 3 units north in total and 5 units west. Isn't it so? टोटल तो यही है, बट किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी दैट फर्स्ट 3 units आर नॉर्थ 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 एंड देन 5 आर वेस्ट. दिस कुड बी वन केस, यानी कि फर्स्ट नॉर्थ नॉर्थ देन नॉर्थ एंड देन वेस्ट 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 वेस्ट. ये केस बन सकता है. और फर्स्ट 2 आर नॉर्थ देन 4 आर वेस्ट और एनी नंबर इज वेस्ट. 4 वेस्ट हो गया, एक और नॉर्थ बचा है, 1 मोर नॉर्थ एंड 1 वेस्ट. दिस कुड ऑल्सो बी बेसिकली वी हैव टू अरेंज 3 नॉर्थ एंड 5 वेस्ट. और जितने वेज में अरेंज कर लेंगे उतने ही हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे. तो सिंस देर आर टोटल 8 स्टेप्स टू बी टेकन, 8 steps to be taken, out of 8 steps 3 are in the north direction, 5 are in the west direction, 8 factorial will be total number of ways. But since 3 north are same, so dividing by 3 factorial and 5 west are same, तो 5 factorial से divide करेंगे तो 8 factorial by 3 factorial into 5 factorial, that should be our answer. That should be our answer. Isn't it so? तो आंसर अपना हो जाएगा 8 into 7 which is equal to 56 ways. Total ways will be 56 option. क्या है क्लियर? Okay. So our answer in this case will be 56 ways are there in total that are unique.
or basically if you have m plus n items, out of which m are alike and n are alike, and we have to arrange these m plus n items, number of ways क्या होगा, that will be m plus n factorial divided by m factorial into n factorial. This will be our total number of ways. Okay, वही सेम हमने यहाँ पे किया कि 3 north and 5 west, we had to arrange, total 8 are there, 8 factorial divided by 3 factorial into 5 factorial, that will be our answer. Next question. The figure below shows the plan of a town. The streets are at right angles to each other. A rectangular park P is situated inside the town with a diagonal road running through it. There is also a private region D in the town. Neelam rides her bicycle from her house at A to her office at B, taking the shortest path. Then number of possible shortest paths that she can choose is how much? Number of shortest paths that she can choose from point P to point, एक सेकंड, not from point P, from point A to point B. A से B तक जाना है और शॉर्टेस्ट पाथ हमें चूज करना है. ठीक है, सिंस वी नीड टू चूज शॉर्टेस्ट पाथ्स, और बीच में हमारे पास देयर इज अ रेक्टेंगुलर पार्क इनसाइड विच देयर इज अ डायगोनल रोड एज वेल. रेक्टेंगुलर पार्क इनसाइड विच वी ऑल्सो हैव अ डायगोनल रोड, और हमारा इंटेंट क्या है, टू चूज द शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है, सो इफ यू हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ, तो इन द रेक्टेंगुलर पार्क वी कैन गो बाई साइड, या तो जाए ही नहीं रेक्टेंगुलर पार्क से, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, कि ना जाए उस रेक्टेंगुलर पार्क से, बट क्या वो शॉर्टेस्ट पाथ चूज होगा फिर हमसे, बिकॉज इन साइड द रेक्टेंगुलर पार्क वी ऑल्सो हैव अ डायगोनल रोड. And by Pythagoras theorem, we know that if we have a right angle triangle with side lengths A, B, and C, in that case, A square plus B square is equal to C square, or squares of the sides का sum, that is always equal to square of the hypotenuse. ठीक है, and A plus B, since this is a triangle, तो A plus B, the sum of two sides, that will always be greater than the length of the third side. So basically, this will be the shortest route. Instead of going via A plus B, this will be better to go via the hypotenuse, isn't it so? So in this park, we know for sure that this diagonal road should be the shortest. और जब भी हम रूट चूज करेंगे तो वहां पे डेफिनेटली फिर हमें इस रूट से तो जाना ही जाना है. सिंस वी नीडेड टू चूज द शॉर्टेस्ट पाथ, डेफिनेटली वी मस्ट चूज दिस डायगोनल रूट. दिस डायगोनल रोड वी मस्ट ऑलवेज चूज. और अगर डायगोनल रोड को चूज करना है तो डेफिनेटली at some point Neelam will be coming to this point, and from this point to this point, this should be the only way. This should be the only way. ठीक है, let us make this point, name this point as m. m name कर देते हैं इसको, and this point is n. So definitely shortest path will be from A to m, and then from m to n via the diagonal road, and then from n to b. तो 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ वेज टू कम फ्रॉम ए टू एम, देन फ्रॉम एम टू एन, एंड देन फ्रॉम एन टू बी. अब एम से एन तक का तो एक ही रूट है, एक ही रूट पॉसिबल है, शॉर्टेस्ट रूट तो एक ही पॉसिबल है, अदरवाइज तो काफी रूट हो जाएंगे, बट शॉर्टेस्ट तो एक ही पॉसिबल है, एग्जैक्टली वन, द डायगोनल रूट. तो दिस रूट इज एग्जैक्टली वन. ए से एम तक के रूट्स कितने होंगे, तो फ्रॉम ए टू एम वी हैव ए 2x2 ग्रिड. ठीक है, 2x2 का ग्रिड है, तो फ्रॉम ए टू एम there is a 2x2 grid, जिसमें कि if we consider this direction as right and this direction as down, so we have to take total 4 steps, out of which 2 will be down and 2 will be right, और इन्हीं को अरेंज करना है. टोटल 4 स्टेप्स हैं, 4 फैक्टोरियल बेस में अरेंज हो सकते हैं. डिवाइडेड बाई 2 आर सेम, 2 फैक्टोरियल 2 मोर आर सेम, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 4 into 3 by 2. 6 ways are there to go from A to M. 6 ways to go from A to M. 1 way to go from M to N. Now N to B. So from N to B, this is a 2x4 square. And this 2x4 square, we have to go 2 steps down.
and 4 steps right. Total steps are 6. Number of ways will be 6 factorial divided by 2 factorial into 4 factorial. This will be 6 into 5 by 2, yani ki 15 ways will be there. 15 ways to go from N to B. Okay. 15 ways to go from N to B. So total answer will be 6 into 1 into 15. That is equal to 90 ways. 90 ways will be the answer. Option. The answer हो जाएगा in this case. Is that clear? Okay. Clear है? 90 will be the answer in this case. Okay. Next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है. द क्वेश्चन पार्ट इज डिफरेंट, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज एग्जैक्टली सेम. और क्वेश्चन हमसे कह रहा है नीलम राइड्स हर बाइसिकल फ्रॉम हर हाउस एट ए टू हर क्लब एट सी, फ्रॉम ए टू सी वाया बी taking the shortest path. Again, path should be shortest, then number of possible shortest paths that she can choose. So she has to go from A to C via B, यानी कि A to B, then from B to C. And since still the path should be shortest, तो A से B जाने के number of ways हम already निकाल चुके हैं. That was equal to 90. That was equal to 90. अब now we need to find out number of ways to go from B to C, point B to point C. पॉइंट बी से पॉइंट सी में जाना है, वाइल देयर इज ऑल्सो अ प्रोहिबिटेड रीजन. तो प्रोहिबिटेड रीजन से तो नहीं जा सकते, बिकॉज गोइंग थ्रू दैट रीजन इज प्रोहिबिटेड. तो समहाउ साइड से हमें निकलना पड़ेगा. ठीक है. तो द पाथ अवेलेबल टू अस विल बी दिस पाथ. So inside this path we can choose any ways to go. So कितने number of ways होंगे in total in this case? Now if we need to choose go from point B to point C, ठीक है, so somewhere in the middle either we will be at this point, either we will go from this point via this point, or we will go from this point via this point. ठीक है. So these two cases will be there. इसके अलावा तो कोई केस नहीं आएगा. या तो दिस पॉइंट विल बी देयर समवेयर इन द मिडिल, और दिस पॉइंट विल बी देयर. बिकॉज यहाँ पे हमें समहाउ पैटर्न निकालना पड़ेगा, टोटल वेज काउंट करने हैं, अदरवाइज हम ये पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर नंबर ऑफ वेज निकालने में प्रॉब्लम ज़्यादा होगा हमें. इजंट इट सो? सो वी हैव टू फाइंड आउट टू केसेस. यही दो केसेस बनेंगे हमारे. वन केस विल बी गोइंग वाया दिस पॉइंट, सेकेंड केस विल बी गोइंग वाया दिस पॉइंट. और दोनों केसेस कॉमन तो नहीं होंगे, बिकॉज इस पॉइंट से जाके हम फिर डाउन तो नहीं आने वाले, बिकॉज इस बार हम अप जा रहे हैं. तो डायरेक्शन इस बार हमारा क्या है? फ्रॉम बी टू सी नंबर ऑफ वेज, तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स अप. तो 6 अप इन टोटल एंड 2 लेफ्ट. 6 अप एंड 2 लेफ्ट. बट आंसर हमारा 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल नहीं होगा, बिकॉज सारे वेज ओपन नहीं है. अगर बीच में डी रीजन नहीं होता तो स्ट्रेट अवे हम आंसर क्या करते? 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. बट ये आंसर नहीं होगा, बिकॉज देर इज अ प्रोहिबिटेड रीजन एज वेल. तो सारे जो वेज हैं हमारे उनको हम एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, सारे वेज को चूज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट चूज दिस वे कि जहाँ पे कि हम पहले ही 2 लेफ्ट ले लें और फिर उसके बाद में अपवर्ड जाएंगे, तो देयर विल बी प्रोहिबिटेड रीजन जिसको हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे. दैट इज वाई दिस विल नॉट बी द आंसर. ठीक है. सो हमने दो केसेस लिए. लेट अस मार्क दीज पॉइंट्स एंड लेट अस से दीज पॉइंट्स आर पी एंड क्यू. दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू. So point P and point Q. So one way could be from B to C, P to P, and then from P to C. Or another way could be from B to Q and then from Q to C. So either of them we can choose. ठीक है. If we want to go from B to P, B से P जाना है, तो B से P तक जाने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? From B to P there are total 1 2 3 4 5 steps upwards and 1 step left. So from B to P 5 up and 1 left. So number of ways will be total 6 factorial divided by 5 factorial into 1 factorial. So number of ways हो जाएंगे 6. And then from P to C, from P to C we have 1 step upwards and 1 step left. So this is 2 factorial divided by 1 factorial into 1 factorial, यानी कि 2 ways 6 into 2 यानी कि 12 ways will be there from B to C via P. Similarly from B to C via Q. So if you have to go via Q, so B to Q we have total 6 steps upwards. एग्जैक्टली वन वे होगा, बिकॉज ऑल स्टेप्स आर अपवर्ड्स. सो एक ही चॉइस है हमारे पास.
there is no left step. And from Q to C, we have exactly 2 steps. एक सेकेंड Q से C तक जाना है, तो वी हैव एग्जैक्टली 2 स्टेप्स लेफ्टवर्ड्स, इजंट इट सो? तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली 1 वे है, एग्जैक्टली 1 वे, यानी कि B से वाया Q टू C विल बी एग्जैक्टली 1 वे, और ईदर ऑफ दीज टू वी कैन चूज। या तो फर्स्ट वाला चूज करेंगे या फिर सेकंड वाला चूज करेंगे। ओके, क्लियर है? तो टोटल वेज विल बी 13, 1 plus 12, 13 ways, 13 ways to go from B to C, 90 ways from A to B, 13 to go from B to C. So total answer will be 19 to 13, that is equal to 1170 ways in total. ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। टोटल वेज विल बी 1170। क्या है क्लियर? ठीक है, सो दिस विल बी ऑल इन दिस सेशन, एंड आई बिलीव जो भी मैंने डिस्कस किया वो समझ में आएगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी कहीं पे डाउट रहता है, ठीक है, तो एक बार अपने एंड पे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना कि वाई आई चोज 2 पॉइंट्स, 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स P एंड Q इंस्टेड ऑफ अदरवाइज सॉल्विंग, बिकॉज अदरवाइज सॉल्विंग में प्रॉब्लम ये होगा, सिंस देयर इज अ प्रोहिबिटेड रीजन, तो हमें इन केसेस को जब तक हम सेपरेट नहीं करेंगे, कॉशियसली नहीं देखेंगे, तो कहीं ना कहीं पे एरर होगा, या डबल काउंट करेंगे, या फिर ऐसे केसेस काउंट कर लेंगे जो पॉसिबल ही नहीं होंगे। ठीक है, अगर प्रोहिबिटेड रीजन नहीं होता तब तो स्ट्रेट अवे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, सिमिलर वे में ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं, बट सिंस देयर वाज अ प्रोहिबिटेड रीजन, सो वी हैड टू मेक सच 2 एग्जॉस्टिव केसेस। ओके, so that's all for this session, and I believe जो भी डिस्कस किया समझ में आएगा। If you like this session, then make sure to hit the like button as well, and for any questions or queries you can always message me on Telegram at adityakt. That's all, and if you've not already subscribed to the channel, make sure to subscribe to the channel as well as share about it with others. That's all. Bye bye, take care and keep learning.